Thank you very much for calling me on this dais, and this is a wonderful dais. And I also not only give the lectures, but I also learn various things from the various speakers. So this is a wonderful opportunity for everyone who are not only the speakers but also for the viewers also. So thank you very much, and I do good morning to everyone, and I will start the thing. The first of all, I will continue what the earlier speaker has said. The importance of appointing legal advisor or a PMC or an architect before starting the redevelopment process. Obviously, as per the norms of the government directions, it is mandatory to appoint a project management consultant, but there are various court judgments. If any society is not appointing a PMC also, but there is a majority, you may continue. But looking at the importance and the very seriousness about the redevelopment process, it is important to appoint a good project management consultant to entire redevelopment process. Wherein in a PMC, you should have first of all is an architect, then there should be a legal advisor, there has to be an engineer, and many other aspects has to be considered while giving the project management consultancy. First of all, when we start consultancy as a PMC to the any society, the most important thing is the feasibility, because unless and until you are not understanding the volume of your project, you will not come to know where exactly you want to go. So in the feasibility, we can understand what is the total construction area, what is the total carpet area, what could be the project cost, including the approval cost, including the construction cost. All these aspects will cover in the feasibility, and what you can expect from the redevelopment. So once your views are clear, you can definitely go smoothly in the next process of the redevelopment. So for preparing the feasibility, you require certain basic documents that society should have. That is, you should have your approved plan copy, you should have your commencement certificate, you should have your OC certificate. Generally, the societies are not so particular for storing these very important documents, and they don't understand the gravity of these documents. And one society, we were the PMC, and they have been selected as a post selection of the developer. And when they have submitted their plans to the MCGM, MCGM refused to give the free fungible. This is just an example I am giving what is the importance of the having a documents with the society. And then they said that you don't have the approved plan copy, you don't have the OC certificate, so we will not be able to give you the free fungible. Then developer said that it is the responsibility of the society to give me the approved plan copy, to give me the OC certificate. And unless and until these things are not provided to me, I'm not in a position to pay the premiums, unless and until you do the bargain with me for additional area. So that was the dispute point. So I request all the society members to organize their office in a such a way they have all the required documents which are necessary to go for the redevelopment. Once your PMC goes through your documentation, he will prepare a feasibility report. And the feasibility report, why it is important, not only it gives you the what it could be the additional carpet area, what could be your additional corpus, what could be rent. That is the only information is not given in the feasibility report. You will also get what is the quantum, कि ये प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है और ये प्रोजेक्ट के लिए कौन सा डेवलपर आ सकता है. So that is also very important. जैसे अर्लियर एडवोकेट अमित जी ने कहा था कि बिफोर अपॉइंटिंग अ डेवलपर यू शुड ड्राफ्ट अ प्रॉपर टेंडर डॉक्यूमेंट्स. तो वो टेंडर डॉक्यूमेंट में ये सब पैरामीटर्स की ये प्रोजेक्ट का कैपेसिटी और डेवलपर का कितना होना चाहिए, उसका जो क्राइटेरिया हम लोग डिसाइड करते हैं उसका नेटवर्क कितना होना चाहिए, ये सब हम लोग टेंडर में डाल सकते हैं. और इसके बाद जब टेंडर लेंगे तो लिमिटेड डेवलपर्स और जो कैपेबल डेवलपर्स है वही इस रिडेवलपमेंट प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं. अगर किसी ने दे भी दिया तो ये सब पैरामीटर्स अपने को टेंडर में इनकॉर्पोरेट करना जरूरी है, ताकि आगे चल के रीडेवलपमेंट में कोई भी जो डेवलपर है जो ज्यादा ऑफर देता है लेकिन उसका कैपेसिटी नहीं है, वो प्रोजेक्ट के लिए बाधा नहीं डाल सकता है. सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट while preparing the tender documents or the criteria
for the finalization. Then the documentation में जो advocate अमित जी ने कहा था कि it is very important to have the proper development agreement, proper power of attorney. But development agreement का base भी tender document होता है. So your tender document, that is the first legal document which you give to the developers to fill up and give back, is also very important, because on that basis our development agreement takes a shape. So ये सब करने के बाद, once we go for the actual redevelopment, we should see that जो plan जो developer बना रहा है, it is as per the requirement of the society. Because if the plans are not as per the requirement of the society, again it is of no use, because redevelopment we are not doing for the developer, we are doing it for the society purpose. So the planning aspect is also be checked by the PMC, what kind of plans he is preparing, और जो plan बनाया है वो as per the requirement है कि नहीं है, वो भी देखना बहुत जरूरी है. Then after submission of the plans, उसने जो जो conditions fulfill करनी है in the authority, whether he has done all these permissions correctly or not, that is also the responsibility of a good PMC. जब वो पूरी conditions fulfill करेगा तभी अपने members को हम लोग building vacate करने के लिए guide कर सकते हैं. So this is also very important, because आप देखेंगे कि बहुत सी buildings जल्दी vacate कर देते हैं और कुछ कुछ कंडीशंस ऐसी रहती है जो फुलफिल करना डेवलपर के लिए मुश्किल हो जाता है, और बाद में 2-3 साल वैसा ही काम चालू रहता है. मींस people are out of their premises, builder is not paying the rent, so all these complications बढ़ जाते हैं. उससे पहले ही हमें अगर मालूम पड़ता है कि बिल्डर ने ये सब कंडीशंस फुलफिल की है, तभी हम अपने मेंबर्स को बिल्डिंग वेकेट करने के लिए इजाजत दे सकते हैं. और दूसरी बात कि जो बैंक गारंटी वगैरह है, तो वो बैंक गारंटी अगर डेवलपर ने प्रॉपर दी रहेगी तो, लेकिन बैंक गारंटी इज नॉट द ओनली क्राइटेरिया, क्योंकि बैंक गारंटी को एक्चुअल यूज करने के लिए भी बहुत टाइम लगता है. इट इज वेरी रेयर केसेस कि हम देख सकते हैं कि बैंक गारंटी भी किधर यूज कर. इसके लिए प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ द डेवलपर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. और मेरे ख्याल से दिस इज व्हाट आई कैन से about redevelopment in a private property. In a private property ka redevelopment, and there is this is the topic in today's scenario, is a private redevelopment. Private redevelopment में जो माडा की buildings है वो include नहीं होती है, SRA नहीं है, on the collector's land it is not included. Only the private buildings which are have a clear title and they are not in the MADA or in SRA or in a CES category, so it is the private redevelopment. Babu sir, please. Yeah, sir, पहला सवाल ये है आपको कि रीडेवलपमेंट करते टाइम अलग अलग प्लॉट का अलग अलग ऑफर्स आती है. फॉर एग्जांपल कुछ प्लॉट में 35% देते हैं, कुछ जगह में 20% देते हैं, कुछ जगह में बिल्डर 50% भी देता है. तो रीडेवलपमेंट करते रहे वो बोलते हैं कि आपका रोड विड्थ का ये प्रॉब्लम है, आपका सेटबैक ज्यादा जा रहा है, you are not in a position to get fungible FSI, you are not. So we as a layman, housing society, office bearers or a committee are not able to understand. तो आप ये बता पाएंगे कि what is this development control provision in which different type of FSI, TDR, fungible FSI अलग अलग क्या होता है, रोड विड्थ का क्या मायना रखता है, क्या ये सब फिजिबिलिटी रिपोर्ट में आप कवर करते हैं या किस तरह से फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाया जाता है? Obviously it is a very in-depth subject, but I can tell you very shortly कि एक प्लॉट में अगर कोई डेवलपर 35% ऑफर कर रहा है, तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उसके बाजू वाला प्लॉट में भी वो 35% ऑफर. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल कि एक रोड पे जो बिल्डिंग है तो वहां पे डेवलपर इज ऑफरिंग 35% और दूसरे प्लॉट में कहता है कि योर प्रपोजल इज नॉट वायबल. तो ऑल ऑफ अ सडन बाजू की सोसाइटी बोलते हैं, तो बाजू का डेवलपर जो उनको 35% दे रहा है और आप बोल रहे हैं हमारा प्रपोजल वायबल क्यों नहीं है. तो देयर आर वेरियस रीजंस. एक तो आपका कंजम्पशन इन द प्लॉट कितना हो गया है वो इम्पोर्टेंट है. बाद में ये जो रोड विड्थ है, what do you mean by consumption on the plot? Can you explain what do you mean by consumption on the plot? कंजम्पशन मतलब कि अगर आपका मैं जस्ट 1000 स्क्वायर मीटर का प्लॉट है और आपके प्लॉट में अगर 1100 या 1000 स्क्वायर मीटर का कंस्ट्रक्शन हो गया, 1000 स्क्वायर मीटर का, तो 1:1 आपका प्लॉट का कंजम्पशन हो गया है. कोई कोई जगह पे बिकॉज ऑफ द वेरियस प्रीवियस सेटबैक और कुछ अलग रूल्स के वजह से अगर आपके प्लॉट में 1500 स्क्वायर मीटर कंस्ट्रक्शन हो चुका है, तो ऑलरेडी यू हैव क्रॉस द लिमिट
of 1:1, means you have consumed 50% more than the prevailing, means that as per the present policy. तो बाद में जो एडिशनल एफएसआई देने का एडिशनल एरिया जो डेवलपर को कंस्ट्रक्ट करने को मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा, क्योंकि अभी एफएसआई कैप है. एफएसआई कैप इज उसके ज्यादा हम लोग कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते. दैट इज द डीसीपीआर में ही रेगुलेशन नंबर 30 एफएसआई कैप इज डिफाइंड. अगर कोई रोड 9 मीटर से छोटा रहे, मीन्स कोई प्लॉट फ्रंटिंग लेस देन 9 मीटर, उनको सिर्फ एक ही एफएसआई मिलेगा. जो 9 मीटर से 12 मीटर तक है तो उनके लिए 1+1 एफएसआई, दैट इज 2 एफएसआई इज परमिसिबल. 12 मीटर से 18 मीटर के लिए है तो 2.2 एफएसआई. 18 मीटर के ऊपर है और below the 27 meter you will get 2.4 FSI, and more than 27 meter you will get 2.5 FSI, and over and above this FSI 35% fungible is also permissible. तो road width के हिसाब से हमें FSI मिलता है. So this is hello. हाँ, अपना ये जो FSI मिलता है depending upon the road width. Now in the service road, now I understood that even highway is considered as a part of width. Is it so? Yes, correct. But highway and the service road should be at the same level. Otherwise, if the highway there is a bridge and your service road is below the highway, so because the access from where you are taking, that is more important. Okay. Yeah. So Sandeep ji, yes, what we are trying to say is, in the case of a feasibility report, first and foremost is what is the FSI presently used as versus the available of the plot. That is very important to be considered. If there is a work consumption, if the built up area is more than what was available with one FSI, additional, that will be, disadvantages. Second, you said, yes, road width is very important. If the road width is more than 9 meter, then only you are able to take a FSI, TDR and fungible FSI. If it is less than 9 meter, actually you will not be able to load the TDR. So then you are not able to load the premium FSI. What you can do is only the available present FSI plus 35% fungible FSI, which means the redevelopment does not become viable. So 9 meter road width is a very important. Right. Third thing you said, yes, if the road width is more, then the FSI instead of 2, then it can be 2.2, 2.5, 2.4, and so on. 2.2. And you also said there is something called cluster development. Can you explain what is cluster development? And in a housing society, for the suburb and in city, what is the area required for the cluster development? And because of the cluster development, what is the road width required and how much FSI they can get? Yeah, in a cluster redevelopment, the basic criteria in the suburb is to have a 6,000 square meter plot area, and in the city it should be 4,000 square meter. So अगर आपका सोसाइटी का प्लॉट एरिया 3,000 स्क्वायर मीटर है और बाजू का 2,000 है और उसके बाजू का 1,000 है, तो 3 सोसाइटीज का प्लॉट मिलके अगर 6,000 स्क्वायर मीटर होता है, then you are eligible for go in the cluster redevelopment in the suburbs. Likewise, in the city, you should have a minimum 4,000 square meter plot area. And minimum road width, earlier it was 18 meter, now it has been reduced. अगर आपका 12 मीटर का भी 12 मीटर के ऊपर का रोड रहेगा तो you are eligible, मीन्स उधर से अगर आप रोड का विड्थ लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो you are also eligible, और कमिश्नर में कंसीडर your file to go for the cluster redevelopment also. Okay, so by क्लस्टर रिडेवलपमेंट में आपको चार एफएसआई मिलता है, और जो आपका एग्जिस्टिंग एरिया है उसके ऊपर इंसेंटिव एफएसआई मिलता है, दैट इज इंसेंटिव एफएसआई प्लस फंजिबल, और जो अपने को शेयर करना पड़ता है माडा के साथ, वो सब कॉम्बिनेशन करके भी क्लस्टर रिडेवलपमेंट इज उसमें ज्यादा बेनिफिट्स है. लेकिन मेजॉरिटी ऑफ द सोसाइटीज थिंक दैट कि बाजू के सोसाइटी के साथ अपना कैसा जमेगा. तो माय humble request to the societies is that try to get the in a cluster, because cluster में अपने को ज्यादा amenities भी देने हम लोग दे सकते हैं. You are advising that it is better to go for cluster development. Yes. Correct? मेरे को ना पैर दुखता है बहुत, शरीर दुखता है, मेरे को आराम नहीं मिलता.
Yeah, Nikita, can you put yourself on the mute, please? Oh, MahaSeWA, yeah. Okay. Sandeep ji, the next question is, there is people who say, and you also said, that there is something called free FSI. That is a fungible FSI which is given free of premium, and there is some fungible FSI 35% which is given by cost. Now there is a misconception among number of people that fungible FSI is free of cost, therefore it has to come to the members. And naturally, if I have got 100 square meter, say flat, say 1000 square foot, I should automatically get 135 myself, plus another 35% should be given by the builder. So like this, I should get 70% additional, benefit in the redevelopment. How you look at it? You are on mute. Unmute yourself. Yeah. There are a lot of misconceptions about the fungible FSI in the society members. Generally, they feel that this fungible FSI has to be given, means entirely free of cost to the members. But looking at the viability of the project, we have to check it out whether 35% is possible or not. If the 35% is not possible, if the developer is giving say 20%, then the 15% of the fungible he cannot use in the cell component. That doesn't mean कि 15% भी उसको अपने members को ही देने का है. अगर ये 15% he is not giving to the existing members, then definitely he is not allowed to use it in the cell component. That's all. Otherwise वो सेल कंपोनेंट में यूज नहीं कर सकता. इतना ही फंजिबल का ये है. अगर if the project is looking at the viability, if it is feels that the 35 after giving the 35% to the existing members, developer may use as a free component, and the balance sellable component he can use it in the cell component. That all depends on the feasibility report. Sir, what happens in the redevelopment is the base area, that means the existing area. Now people, in the existing area, there is something called area as per the approved plan. Then lot of societies have encroached the balconies. There are free of FSI the terrace. Now people do demand, and the area as per the approved plan, area as per the BMC assessment, area as per the agreement, area as per the, actually occupying. They are all different areas. Right. So at the time of redevelopment, what is the area that is to be considered as a base area? Whether balcony which is there, can I expect that to be part of the FSI, and then I can take the benefit? Let us say my area is 500 square foot, 100 square feet is my balcony, so I've got 600 square foot. I will get the benefit on 600 square foot, that is 35% on 600 square foot, or on 500 square foot. This need to be clarified. Okay. Generally, there are various carpet area parameters that society shows to the PMC or the developer. One is their approved building plan copy, one is the assessment tax, one is the actual measurement, one is some encroachment. But the basic criteria for authenticity of the existing carpet area is as per the approved plan. And as per the approved plan, only society should get additional carpet area. Then there should not be any dispute. अगर किसी ने कुछ एनक्रोचमेंट किया है तो एनक्रोचमेंट हम लोग जनरली नहीं कंसीडर करते फॉर देयर एग्जिस्टिंग कार्पेट एरिया. अगर किसी की बालकनी है बराबर, तो बालकनी उस टाइम में 10% ऑफिशियली मिलती थी सब डेवलपर्स को, और डेवलपर लोग बेचते थे एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए. तो मेंबर्स अभी कहते हैं कि ये बालकनी हमारे फ्लैट के साथ अटैच है और इट इज ऑफिशियली देयर इन द अप्रूव्ड प्लान कॉपी ऑल्सो. तो जनरली जब हम लोग फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं तो जो कैलकुलेशन का पर्पस रहता है, तो वहां पे हम लोग बालकनी एरिया डिडक्ट करते हैं फॉर द फ्री फंजिबल, और उसके बाद में जो सेलेबल फंजिबल है वो कंसीडर करके पूरी फिजिबिलिटी निकालते हैं. लेकिन जब एग्जिस्टिंग मेंबर्स को हम लोग एडिशनल एरिया देते हैं, तो जनरली हम लोग ट्रेंड ये है कि अगर उसको बालकनी एरिया भी हम लोग कंसीडर करते हैं, तो उसके बाद हम लोग कितना एडिशनल कारपेट एरिया इंक्लूडिंग हिज बालकनी दे सकते हैं वो देखते हैं. बिकॉज फंजिबल कितना पे करने का कितना नहीं करने का, दैट इज ओनली द कमर्शियल टर्म्स. लेकिन सबका जो बालकनी रहता है, दैट इज अ वेरी ऑफिशियल एरिया दैट हैज बीन अलॉटेड टू दैट पर्टिकुलर मेंबर at that time, because the balcony was
प्रॉपर रेगुलेशन में थे. तो while considering the existing carpet area, I should suggest that all developers or all the society members should consider balcony as the basic carpet area. Whatever the calculations are there for the fungible, that is a different story. लेकिन जो टेरेस एरिया है, जो टेरेस एरिया है जो फ्री ऑफ एफएसआई क्लेम किया है, वो हम लोग कंसीडर नहीं कर सकते. चालू थी. यस. हेलो हेलो, महासेवा का ये कौन है, एडमिन कौन है? कैन यू मेक मी को होस्ट? पवार कौन है? अश्विन है? हेलो अविनाश? हा सर, करतो मी. थांबा. मला को होस्ट करना. हा थांबा, मी म्यूट पण करतो, तुम्हाला को होस्ट पण करतो. हेलो. Coming to the next point. Hello. Sandeep ji, there is a question. What is the time frame generally for obtaining IOD, CC, subject permissions and approval being in place? Is there any time limit for the developer to start the construction after CC is issued? Can you highlight on this? This is Sanjay Oak has asked this question. Yeah, very nice. Yeah, very nice question. कि ये जो टाइमलाइन हमें चाहिए डेवलपर से, तो हम लोग टेंडर में ही ये सब इनकॉर्पोरेट सकते हैं कि वंस यू गेट सिलेक्टेड व्हाट शुड बी द टाइमलाइन, कि आप बेसिक प्लान्स कब देंगे, आप बेसिक डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट कभी देंगे, उसके बाद में प्लान्स अप्रूव होने के बाद आप कितने टाइम में सबमिट करोगे, कितने टाइम के बाद आपका आईओडी एक्सपेक्ट है, कितने टाइम के बाद आपका सीसी एक्सपेक्ट है, सीसी के बाद का जो ओसी का जो पीरियड है वो कितने का है. ये फर्स्ट बेसिक टाइमलाइन हम लोग टेंडर में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, ताकि क्या जो पीएमसी है उसके लिए वो आसान रहेगा कि वो क्रॉस वेरीफाई करने के लिए. जस्ट फॉर एग्जांपल, जैसे ही डेवलपमेंट एग्रीमेंट अपना फाइनल होता है और प्लान उसके साथ साथ डेवलपर सोसाइटी से अप्रूव करके लेता है, तो सबमिशन के बाद कंसेशंस के लिए फाइल मूव होती है. तो कंसेशन के लिए अगर आप कंसीडर करो 1 महीना या 2 महीने आप कंसीडर कर सकते हैं, और उसके बाद में आईओडी के लिए और 1 महीना. तो मैक्सिमम आपका जो आईओडी है 4 महीने में आ सकता है, और भी ज्यादा अगर टाइम तो मैक्स टू मैक्स 6 महीना आफ्टर द सबमिशन ऑफ द प्रपोजल. अदरवाइज 3 to 4 months इज सफिशिएंट टू गेट द आईओडी, बट उसके लिए सबमिशन होना जरूरी है. तो सबमिशन तक का जो टाइम फ्रेम है, हमें डेवलपर से प्रॉपर उसका जो शेड्यूल है उसमें इनकॉर्पोरेट करके लेना जरूरी है. और सोसाइटी मेंबर्स का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे जैसे डेवलपर उनको अगर डेवलपमेंट एग्रीमेंट का ड्राफ्ट देता है तो जल्दी से जल्दी अप्रूव करके देना चाहिए. जैसे प्लान्स का अल्टरनेटिव्स देता है वो भी फाइनल करके डेवलपर को देना चाहिए. तो ये सब चीजें दोनों तरफ से होनी चाहिए. अदरवाइज सोसाइटी टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फाइनलाइज द वेरियस थिंग्स गिवन बाय द डेवलपर. तो जब तक हम लोग दोनों तरफ से फास्ट नहीं मूव करेंगे तो आईओडी एंड सीसी जल्दी नहीं आ सकता. Okay. Rotarian Ajay K. Gupta, he has asked a question. Is it better to go for detailed feasibility report such that all the issues related to overconsumption of area, height restrictions, CRZ restrictions, permissions are taken in advance? So what is is it better to go for detailed feasibility report in advance? Yeah, miss, जब हम लोग कुछ भी काम करने के लिए कौन सा भी काम, इट इज नॉट ओनली रीडेवलपमेंट, तो जितना डिटेल में हम लोग उसके ऊपर वर्किंग करेंगे दैट इज ऑलवेज बेटर. लेकिन सोसाइटी बहुत शॉर्टकट लेती है, शॉर्टकट की वजह से उसमें डिटेल फिजिबिलिटी वगैरह नहीं रहती. अगर आपको पहले एक बेसिक फिजिबिलिटी बनाने के बाद आपको डिटेल में फिजिबिलिटी करनी है तो आपको एक्चुअली उसका प्लानिंग करके देखना पड़ेगा. उसमें हाइट रेस्ट्रिक्शन के वजह से कुछ दिक्कत आती है तो वो दिक्कत के हिसाब से भी हमें प्लान करना देखना पड़ेगा. उसके एक्चुअल ओपन स्पेस डेफिशिएंसी कितनी आती है, कितने प्रीमियम्स आ रहे हैं, ये सब हम लोग अगर डिटेल में वर्किंग करेंगे तो वो हिसाब से हम लोग प्रॉपर डेवलपर को भी गाइड कर सकते हैं और यही हिसाब से हमें अपनी बिल्डिंग चाहिए ये बोल सकते हैं. बट उसके लिए आपको थोड़ा सा आपके कंसल्टेंट के ऊपर खर्चा करना पड़ेगा. मींस यू हैव टू अपॉइंट अ प्रॉपर आर्किटेक्ट, proper structural engineer who can make the plans, who can make the structural drawings, who can go for in the various authorities for जो कितना सिविल एविएशन का हाइट मिल सकता है. आपको ये भी करना जरूरी पड़ेगा कि आपका सॉइल टेस्टिंग भी करना जरूरी पड़ेगा कि आपको नॉर्मल फुटिंग्स लगेगा या पाइल फाउंडेशन लगेगा. अगर बेसमेंट आप करना चाहते हैं तो बेसमेंट में आपको माइक्रो पाइलिंग करने की जरूरत है क्या, विदाउट माइक्रो पाइलिंग भी आपका हो सकता है. सो ऑल दीज आर द डिटेल वर्किंग
if you go ahead with the proper direction, but उसके लिए आपको सोसाइटी के लिए थोड़ा खर्चा करना पड़ेगा. Okay. Hello. Advocate Amit Mehta, Sir, 1 minute. Sandeep ji, you be there. हाँ, I have a few more questions for you. Before that, let me ask Advocate Amit Mehta. Amit ji, you are there? Yeah. Milan Mehta has asked a question, very important question. Can a society below 50 members select a developer out of tender if the tender received are unsatisfactory? What he mean is, the society has gone for a tendering, the tenders are received, but all the tenders are not satisfactory, and therefore now without further tender they will take the offers from additional developers. Can they do that process if the tenders are not satisfactory? Yes, they can do provided general body approves it. Okay, you mean to say general body is supreme, and redevelopment GR, even if that is not followed in the true letters, but it is followed in the spirit, that is more than enough. That is what you want to say? Yes, that is right. Number one. Number two, if there are 100% consent for any procedure, you don't require a 79A procedure. So many societies, when they appoint a developer and they don't, take the 79A directions. Okay. Now the registrars do, on the basis of some complaint, appoint an administrator, they take over the management, and the redevelopment becomes stalled. So how we can tackle if such registrars take such extreme steps? See, there are certain registrars who are sellable commodities and they just trouble the societies, even though most of the society members are ready for development. We can directly then challenge the matter in the DGR, there is a divisional joint register, or go to the Cooperative Ministry of Maharashtra. Subsequently, or go to High Court and challenge that such orders. Hello. Yeah. Hello. Yeah, who is that? I'm Modi here. Yeah, tell me. Now, what we have just discussed few minutes ago, that if we have got a cluster redevelopment of 6,000 square meter and above area, okay, what about the road width? Actually, there is 18.30 meter is the ideal road width for the cluster, but commissioner may consider a lower road width also, but it should be minimum 12 meter, more than 12 meter. But then our area was going to go for road cutting. Can we say that little bit higher we can give it when the redevelopment will take place? How much is the road width over there? Personally, around 9 plus something is there. What 9 meter. Highway is there, but highway is the bridge. Highway is a bridge, but below there is a service road is also there. Service road and highway. So Highway service is road is around 9 meter. Okay. And your plot is touching to that service road? Correct. Sandeep ji, what I suggest, you can share your mobile number on the chat box. Okay. So that you can interact directly. Because when it comes to a specific question, it becomes difficult. So, Advocate Amit Mehta ji, there is a question to you. If the ownership of the title of the society, Amit, are you there? Yes. Society does not have the conveyance. They do not have the ownership title. Can they still go for the PAAA or a DA? That is one question. Second is, the title of the flat is also in challenge. Can they go for the PAAA? These are the two questions. For the first one, the answer is clear no. You need to have clear conveyance, and also before demolition, the name has to be there on the PR card of the society. That's as far as the first question is concerned. The second question, even though the title is challenged, you can still go for a development, sign at PAAA, but if there is an order of the court restraining not to do it, then you can hold it. Okay. So that means if the title of the flat is not clear, still you can go for the redevelopment. There is no problem. As far as signing the PAAA is concerned, there can be some challenges unless until there is a settlement between the legal heirs. The PAAA may not be signed. Correct? Yes. Okay. So Sandeep ji, you have a question by Milind Mehta. Is the time taken for obtaining CC IOD is the same for residential as well as commercial building, or is there any timber time limits? No, it is the same.